Science and Technology, Standard 10, Part.2. Lesson number 3, Life Processes in Living Organism, Part.2. In this lesson, we are going to study reproduction and modern technology, reproductive health, and population explosion. Now, dear students, we will see what reproduction is. Formation of new organisms of same species by earlier existing organism is called as reproduction. So this is the definition of reproduction. So dear student, reproduction का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म यानी नए ऑर्गेनिज्म का वजूद में आना, उसी नस्ल के का जो ऑर्गेनिज्म है उसका वजूद में आना किसके ज़रिए? पहले से मौजूद ऑर्गेनिज्म के ज़रिए. Dear students, reproduction is one of the important characters of living organism. It is also one of the various reasons responsible for the evolution of each species. है ना? अगर reproduction नहीं होता था तो evolution का सवाल ही नहीं पैदा होता था. अब हम देखेंगे कि ये जो reproduction है इसके types कौन से हैं. In living organisms, reproduction occurs mainly by two methods. Number 1, asexual reproduction. Number 2, sexual reproduction. First, we will study asexual reproduction. Process of formation of new organism of same species without involvement of gametes is called as asexual reproduction. यानी असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इसमें नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, लेकिन इसकी ख़ास बात ये है कि विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते. नाउ हियर वर्ड केम गैमेट. दिस इज़ न्यू फॉर अस. वी विल सी व्हाट गैमेट इज़. डियर स्टूडेंट, गैमेट्स आर द ऑर्गेनिजम्स reproductive cells. They are also referred to as sex cells. यानी ये जो gametes है ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स के reproductive cells होते हैं. इसी का दूसरा नाम sex cells भी है. अब ये जो sex cell हैं they are of two types, यानी कि female gametes and male gametes. Female gametes are called ova or egg cell and male gametes are called sperms. Now we know what gametes are. Gametes are haploid cells and each cell carries only one copy of each chromosome. As asexual reproduction does not involve union of two different gametes, the organisms has exact genetic similarity with reproducing organism. चूँकि asexual reproduction में जो है दो गैमेट्स का मिलाप नहीं होता, यूनियन नहीं होता, इसलिए जो न्यू जनरेशन में नया ऑर्गेनिज्म जो पैदा होता है, रिप्रोड्यूस होता है, वो एग्जैक्टली जेनेटिकली क्या होता है? सेम होता है. दिस इज़ यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन. यानी इस रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट होता है. एंड इट ऑकर्स बाय माइटोटिक सेल डिवीजन. Absence of genetic recombination is drawback of this and fast process is benefit. तो asexual reproduction का drawback क्या है? कि genetic recombination नहीं होता, लेकिन benefit ये है कि ये बहुत ही fast process होता है. Now we will study asexual reproduction in unicellular organisms. Different methods of asexual reproduction in unicellular organisms are: number 1, binary fission; number 2, multiple fission; number 3, budding. Now we will see one by one. Number 1, binary fission. In binary fission, the parent cell divides into two similar daughter cells. It occurs either by mitosis or amitosis.
It takes place during favorable condition. जब हालात साजगार होते हैं तभी ये बाइनरी फिजन का अमल होता है. Binary fission is of 3 types. Number 1, simple binary fission. Example of this is bacteria and amoeba. Number 2, transverse binary fission. Example is paramecium. Number 3, longitudinal binary fission. Example euglena and eukaryotic cell organelle like mitochondria and chloroplast. We can see simple binary fission in amoeba, transverse binary fission in paramecium, and longitudinal binary fission in euglena. Now we will see multiple binary fission. Usually it takes place in amoeba during unfavorable conditions. यानी जब हालात नासाजगार होते हैं उस वक्त ये मल्टीपल बाइनरी फिजन अमीबा में होता है. स्टेप्स ऑफ मल्टीपल फिजन. नंबर 1, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया स्टॉप्स. मूवमेंट स्टॉप्स. सबसे पहले जो सीडोपोडिया जो होता है वो क्या हो जाता है, जो सीडोपोडिया का बनना है वो बंद हो जाता है और हरकत रुक जाती है. देन इट बिकम्स राउंड एंड देन प्रोटेक्टिव सिस्ट इज फॉर्म अराउंड इट. अब ये जो है वो कैसा हो जाता है, राउंड हो जाता है, गोल हो जाता है और उसके अतराफ में एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो बन जाती है, तैयार हो जाती है, जो सिस्ट कहलाती है. इनसाइड द सिस्ट रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस फॉर्मिंग मैनी न्यूक्लियाई. अब ये जो सिस्ट के अंदर जो है बहुत सारा न्यूक्लियर डिवीजन होता है जिसकी वजह से छोटे छोटे न्यूक्लियाई जो है वो फॉर्म हो जाते हैं. आफ्टर दिस साइटोप्लाज्म डिवाइड्स फॉर्मिंग मेनी एमिब्यूली. इसके नतीजे में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और उसके वजह से बहुत सारे जो है एमिब्यूली तैयार होते हैं. सिस्ट परसिस्ट इन एडवर्स कंडीशन. अगर हालात एडवर्स हो, नामवाफिक हो तो सिस्ट वैसे ही रहता है. And when favorable conditions returns back, cyst breaks and releases many amoebulae. और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन साजगार हालत वापस आ जाते हैं तो सिस्ट ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है और उसमें से अमीब्यूली बाहर की तरफ निकल पड़ते हैं. We can see this process in this image. Now we are going to study third method, that is budding. Example we are going to see is of yeast. Here, two daughter nuclei form by mitotic division from parent cell. After this, small bulge appear on the surface of the parent cell. This bulge is referred as bud. इस bulge को क्या कहते हैं, bud कहते हैं. Now, one daughter nuclei enter into the bud, and after this, bud gets separated from the parent cell after sufficient growth. Now, this bud starts living separately. We can see this in this picture, budding in yeast. So dear students, here we finishes asexual reproduction in unicellular organism. Thank you very much.